পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহাম বজাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত গণিত হেতু শিবিৰৰ আজি সফল সামৰণি পৰে। ৰটাৰী গ্লবেল গ্ৰাণ্ট নম্বৰ 23528774 দ্বাৰা পুঁজিৰে চলা এই উদ্ভাৱনী শিবিৰ গ্ৰেহাম বজাৰৰ এই বিদ্যালয়খনৰ উপৰিও মাইজান টি ষ্টেট মডেল স্কুলতো অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মৌলিক গাণিতিক দক্ষতা শক্তিশালী কৰা, গণিত হেতুৰ জৰিয়তে আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ 10খনকৈ বিদ্যালয়লৈ কঢ়িয়াই আনিছে পাঁচদিনীয়া এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত 40জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই আকৰ্ষণীয় কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰে। হিমাচল প্ৰদেশৰ এক প্ৰখ্যাত সংস্থা আৱিষ্কাৰ অনুষ্ঠানৰ শিখৰত গণিত মেলা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আয়োজিত এক্সপো, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নতুনকৈ পোৱা গাণিতিক দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰে। पहले हम बताते हैं कि कहाँ से आए हैं ना। ओके, तो हम आविष्कार से आए हैं। आविष्कार हिमाचल प्रदेश, जो कि आविष्कार एक संस्था है, ये गणित और साइंस पे काम करती है। तो हम डिब्रूगढ़ के 10 स्कूलों में गणित पे काम कर रहे हैं और ये हमारा हर स्कूल में 5 दिन का प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम बच्चों को जो गणित का डर है वो दूर भगाने की कोशिश करते हैं। हम गणित को कहानियों के ज़रिए, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ और खेलों के ज़रिए बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन 5 दिनों में हमने वो किया, बच्चों को हमने गेम के थ्रू गणित को सिखाया और अभी बच्चे जो हैं वो उन गेम को दूसरे क्लास के बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये हमारी टीम है, आप देख रहे होंगे, हम आविष्कार की सारी टीम है और आविष्कार से यहाँ पे आके डिब्रूगढ़ के 10 स्कूल में हम ये काम कर रहे हैं। तो अभी 2 स्कूल में अलग अलग हमारा काम हो रहा है, एक ये ग्राहम बाजार स्कूल में और दूसरा मेज़ान स्कूल में, जो टी स्टेट का एक स्कूल है, वहाँ पे 2 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं। সহপাঠী শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ সৈতে ইণ্টাৰেক্টিভ গেম আৰু কাৰ্যকলাপ আদি সন্নিৱিষ্ট এই কাৰ্যকলাপত ডিব্ৰুগড় ৰটাৰী ক্লাবৰ এই পদক্ষেপত কেন্দ্ৰীয় মঞ্চ গ্ৰহণ কৰে ৰটাৰীৰ অটল সমৰ্থনত জিলা 3240 আৰু দ্য ৰটাৰী ফাউণ্ডেশ্যনে। গুৰুত্বপূৰ্ণ এই গাণিতিক দক্ষতাৰে তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰি উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাই হ'ল এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য।